आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। सो नाउ एज वी ऑल आर एंटर्ड इन 2024, 2023 को पीछे छोड़ दिया, अब हम सब 2024 में दाखिल हो चुके हैं। न्यू गोल्स, न्यू एम्बिशंस, इंशाल्लाह ताला वी विल अचीव इट। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ के बारे में, कुछ ऐसे कंट्रीज़ के बारे में कि जहाँ का न्यू ईयर हमारे साथ स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे साथ स्टार्ट नहीं होना मीन्स कि एज़ वी नो कि वर्ल्ड वाइड ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी को न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। But in the whole world, there are some nations, there are some countries which never followed this calendar. Their new year started in different dates. So now we will discuss about these nations, about these countries. So first of all, the country in which it's followed is India. In India, basically the event of Diwali, which is celebrated in all over the India. This festival of lights is very famous among all the northern Indian communities, and it is celebrated by Hindus, Sikhs and Jains. Indians who are living in every region of the world, celebrating Diwali with a full of joy by decorating their houses, cleaning it, and wearing new clothes and munching some sweets. So usually Diwali is the event of which is followed in all over the India and the communities, which is Marwari and Gujarati. Usually their new year start with the Diwali, as they considered that their new year start on the occasion of Diwali. The Chinese New Year also never starts on the 1st January. Moreover, it is additionally recognized as the Spring Festival or the Lunar New Year. The Chinese New Year. In China, it is followed with all their customs and traditions. When the Chinese New Year starts, Chinese celebrate this year, especially exchanging the gifts in the red envelopes. Although the Chinese New Year is followed in all the China. Now, the next is Telugu and Canada's New Year's. The Indian states, although it's the Indian states in Andhra Pradesh, as per their lunar calendar, these states can be seen celebrating the New Year with their rituals. The day rejoices with the deserts, fireworks, and new outfits. That doesn't mean they never followed the English calendar. Also, they followed, but still their ritual starts with their New Year's, which accepted in the worldwide. Now the next is Korean New Year. In Korea, New Year celebrating long for a period of 3 days, where there is a national holiday in the national to bid farewell, also a beautiful past year and for the New Year celebrations. The Korean New Year also is a different than the others. Although their Korea. There are also different traditions, there are also different customs, and now the New Year's is also different than the other. Now the next one is Tamil New Year. Tamil New Year basically it's also the region of the country. According to the solar calendar, the New Year Day party is celebrated. They also followed the solar calendar and they celebrated their day with their rituals, with the new day year party, celebrating with the new clothes, sweets, decorating the house. This day also celebrations can be seen in Tamilians, which is living in Sri Lanka, Malaysia, Singapore, and all the other countries. Now the next one is Balinese New Year. According to the lunar-based Saka calendar, the first day of this calendar is celebrated as the New Year by the Balinese and Javanese culture. So इनका न्यू ईयर भी इनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग लूनर बेस्ड होता है. लूनर बेस्ड यूजुअली कैलेंडर जो कि फॉलो किया जाता है चांद को देखकर. मीन्स ये कैलेंडर जो स्टार्ट हो रहा है वो चांद को देखते हुए, चांद की डायरेक्शंस को देखते हुए स्टार्ट हो रहा है. जिस तरह यूजुअली मुस्लिम्स में भी ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है. मुस्लिम्स का जो कैलेंडर है वो भी लूनर कैलेंडर के हवाले से ही स्टार्ट होता है.
Now the next is Iranian New Year, which is known as Nowruz, celebrating the beginning of the spring season. Nowruz is celebrated in all over the Iran. During Nowruz, also they followed their own traditions. It's part of their celebration in which they welcome the spring season. The Iranian New Year start in the spring season. Now the next is Islamic calendar, which I already mentioned. That Islamic New Year start of the month of Muharram, which usually followed in the lunar month. It's followed the lunar month. मुस्लिम्स का जो कैलेंडर स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब हम लोग डेट्स में क्या करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं, बट मुस्लिम वाइड जो वर्ल्ड वाइड इनके जितने रिचुअल्स हैं, जितनी बाकी चीज़ें हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, वो फॉलो किया जाता है इस्लामिक कैलेंडर की अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वन आता है ज्यूइश न्यू ईयर। ज्यूइश न्यू ईयर भी जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया जाता। यूजुअली ज्यूइश न्यू कैलेंडर जब भी स्टार्ट होता है, इसमें भी 2 और 3 डेज़ की सेलिब्रेशन होती हैं। फेस्टिवल्स इंक्लूड इन रिचुअल्स दैट आर बोथ परफॉर्म्ड विद द डेमोन्स्ट्रेशन एंड विद क्वाइट कंटमेशन। ज्यूश का न्यू कैलेंडर भी इनके पूरे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली ये कुछ नेशंस ऐसी थी जो कि यूजुअली क्या है, इंग्लिश कैलेंडर के अलावा अपने न्यू कैलेंडर को फॉलो करती हैं। स्पेशली अगर हम चाइनीज़ नेशंस को देखें, इस्लामिक न्यू कैलेंडर को देखें, ईरानियन कैलेंडर को देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया में दिवाली के साथ देखा जाए तो जो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं वो इनके अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली आई शेयर दिस इन्फो फॉर योर जनरल नॉलेज टू नो अबाउट दी अदर थिंग्स कि आज 2024 में पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस की जाती हैं, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, बट अपार्ट ऑफ दैट अभी भी कुछ कंट्रीज़, कुछ नेशंस ऐसी हैं जो इस डे के अलावा अपने कैलेंडर्स को फॉलो करती हैं। I hope you like this content. If you like it, then please hit the like button. So, ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।